Hello everyone, good evening guys, good evening. Welcome to Toppr JEE, your one-stop solution for all your JEE preparations. So good evening students, कैसे हैं सब लोग यहाँ पे? Good evening everyone, good evening. तो यार आज हम डिस्कस करेंगे a new chapter and that is going to be area of bounded regions everyone. Okay, तो यार ये नया चैप्टर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एवरी ईयर वन क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो चलो यार शुरू कर लेते हैं आज के सेशन. सो एवरीवन रेडी? सब लोग रेडी है यहाँ पे? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. तो गाइस हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग यहाँ पे? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. तो चलो यार शुरू कर लेते हैं. Shall we start discussing the today's topic? I hope everyone is ready. तो चलो यार डिस्कस कर लेते हैं आज के टॉपिक. सो यार आज के टॉपिक होगा as I told you एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स के बारे में. ओके, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस many different concepts, like we are going to discuss the concept of graph of standard functions, area under simple curves, okay, or other things also we are going to discuss in today's session. तो चलो यार शुरू कर लेते हैं आज के सेशन. So the first thing यहाँ पे हम क्या करेंगे? First, let me give you a very short introduction about myself. So guys, this is Goutham. I'll be your mathematics faculty for this particular course. Okay, I have done my graduation from IIT Surat. I've been teaching from past 4 years everyone. Okay, I've taught almost 10,000 students online and offline. तो यार ये था short introduction मेरे बारे में. तो चलो यार शुरू कर लेते हैं आज के session. So before we begin with this particular chapter, guys, areas के chapter में it's very important for you to know the graph of many functions. Okay, for example, circle ले लो, ellipse ले लो, hyperbola ले लो, parabola ले लो, modulus function ले लो, greatest integer function ले लो. कई स्टैंडर्ड फंक्शंस, सही स्टैंडर्ड इक्वेशंस का ग्राफ आपको जानना जरूरी है. ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द ग्राफ्स ऑफ मेनी इक्वेशंस एंड मेनी फंक्शंस एवरीवन. क्योंकि क्या होगा कि बेसिकली ये वाले चैप्टर में गाइस व्हाट यू हैव टू डू इज दैट आपको वो जो भी क्वेश्चन दिया है आपको बेसिकली एरिया निकालना है वहां पे, राइट? तो एरिया निकालने के लिए यू नीड टू नो द रीजन, ओके, विच इज बेसिकली पॉइंटेड आउट इन द क्वेश्चन. सो रीजन निकालने के लिए आपको पहला तो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. विदाउट नोइंग द डायग्राम हाउ विल यू बी एबल टू फाइंड द रीजन फॉर विच वी नीड टू फिगर आउट एरिया क्या होगा. सो दैट इज वाई यार ये वाले चैप्टर में you have to have a very good grip, a very good knowledge of the graph of different equations and different functions. So पहला हम क्या करेंगे? Let me run through some of the graphs of standard function. Okay, तो पहले हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे graphs of standard equations, standard functions. We'll go through that and then we'll start discussing the areas concept everyone. Okay, hello Narayan, how are you? Good evening. तो चलो यार शुरू कर लेते हैं आज के सेशन. Good evening everyone, good evening. So let us begin the session today. So guys, the first topic, the first function which we are going to discuss in today's session, in fact the first curve, that is going to be the circle. Okay, तो यार सर्कल आपको पता है कैसे दिखेगा सर्कल? इट्स गोइंग टू बी इन दिस वे, राइट? एंड इफ यू वांट टू राइट डाउन एन इक्वेशन, आई मीन व्हिच इक्वेशन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ सर्कल? वेल, दिस इक्वेशन everyone. If you find any equation of this particular type, x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square, अगर आपको कोई भी इक्वेशन ये वाले टाइप में दिखेगा, let me tell you guys, this equation is going to represent the equation of circle, जिसमें h comma k क्या represent करेगा everyone? Well, h comma k यार represent करेगा center of the circle को, and r is going to represent what? Here r represent करेगा radius of the circle को. Okay, so this is going to be the concept everyone, the first important curve for you, and that is going to be the circle. And यार ये वाले equation circle को represent करेगा. Now let me go to the second one. The second one, let me start discussing the conic sections also. यार conic section में we have many conic sections. We have different type of conic sections, like we have the parabola, यार ellipse, hyperbola भी है. So let me go through
each and every conic section, the different standard equations of this conic section, and उसका graph भी कैसे दिखेगा हम वो भी देखेंगे guys. Okay, so everyone look at here. First important parabolic equation यार, y square is equal to 4ax है ना यार, ये रिप्रेजेंट करेगा ये वाले टाइप ऑफ ग्राफ को, जहां पे अब देखेंगे द ग्राफ इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस, x axis everyone. Okay, and you see this is going to be the equation of y square is equal to 4ax. Okay, and then if you have y square is equal to minus 4ax everyone, यार ये जो भी इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ which is going to be symmetric about the x-axis. And you see the opening of the parabola, यहाँ पे opening left side है, यहाँ पे in the above graph it is towards the right side, यहाँ पे towards the left side है guys. Okay, so that is going to be the difference. So y square equal to 4ax, it's going to represent this type of curve. Y square is equal to minus 4ax, यार वो represent करेगा ये type of curve को. And also, we have other two equations of parabola. Do you remember that? Anyone here? Do you remember the other two equations of parabola? Well, you have x square is equal to 4ay and x square is equal to minus 4ay. तो यार x square is equal to 4ay में अगर आप देखेंगे, this is how the graph is going to look like. इसमें देखो यार, ये ग्राफ सिमेट्रिक होगा y axis से and it's going to be open towards the upside. Okay, and if you take this equation x square is equal to minus 4ay, यार इसका ग्राफ जो भी होगा it's going to be towards the downside everyone, and it's going to be symmetric. Opening downside होगा and symmetric होगा y axis से. So these are going to be the four standard parabolas, okay, the parabolic equations and their corresponding graphs. These are going to be important everyone. Now other than parabolas, यार अभी हम डिस्कस करेंगे एलिप्स के बारे में भी. एलिप्स में क्या होगा बेसिकली कि आपको पता है कि अगर आप कोई भी इक्वेशन ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, गाइस ये वाले इक्वेशन कभी भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एलिप्स को. ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर केस एवरीवन, कि ये वाले एलिप्स में मतलब आपको दो टाइप ऑफ एलिप्स मिल सकता है. एक एलिप्स ऐसे होगा, ये वाला एलिप्स, दूसरा एलिप्स ऐसे होगा. फर्स्ट टाइप ऑफ एलिप्स में इफ यू सी, इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है. सेकेंड टाइप ऑफ एलिप्स में अगर आप देखेंगे इसका मेजर एक्सिस होगा वाई एक्सिस. तो आपको कैसे पता चलेगा? जस्ट बाय सीइंग द इक्वेशन हाउ कैन यू डिसाइड कि वेदर यू आर गोइंग टू गेट दिस ग्राफ, ये वाला ग्राफ मिलेगा नहीं तो ये वाला ग्राफ मिलेगा. वेल इट्स वेरी सिंपल गाइस, यार आप कुछ मत करो, यहाँ पे ये वैल्यूज ऑफ ए एंड बी है ना, आप कंपेयर करो. अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन b है, लेट अस से a वैल्यू इज ग्रेटर देन b, इन दैट केस एवरीवन यू आर गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर ग्राफ. अगर a का वैल्यू लेस देन b है, in that case what is going to happen? This is the graph you're going to get everyone. Okay, so I hope this point is clear for all the students out there. Hello Kunga Kajuria, hello, good afternoon, sorry, good evening, how are you? I hope you are fine. तो समझ में आ गया ये वाला पॉइंट यहाँ पे. सो एलिप्स का दो टाइप ऑफ ग्राफ मिलेगा आपको, ये वाला एक ग्राफ होगा, ये वाला एक ग्राफ होगा. अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन b है आपको ये ग्राफ मिलेगा, अगर a का वैल्यू लेस देन b है आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा. गाइस आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू. नाउ लेट मी गो टू अनदर कर्व, अनदर कोनिक सेक्शन, एंड दैट इज गोइंग टू बी हाइपरबोला. तो गाइस यार हाइपरबोला में बेसिकली क्या होगा कि हाइपरबोला में अगर आपको देखेंगे यहाँ पे ये आपको दो टाइप ऑफ हाइपरबोला मिलेगा. दिस इज द नॉर्मल हाइपरबोला, दिस इज द कॉन्जुगेट हाइपरबोला. तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट एवरीवन? वेरी वेरी सिंपल. अब देखो यार, अगर आपको ये टाइप ऑफ इक्वेशन दिखेगा ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यार ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा ये टाइप ऑफ हाइपरबोला को. अगर आपके पास ये टाइप ऑफ इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर by b square equal to -1, if you have this type of equation, then यार ये equation represent करेगा ये type of hyperbola को. Okay, so I hope
दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन आउट देयर कि हाइपरबोला में भी आपको दो टाइप ऑफ डायग्राम मिलेगा, ये वाला डायग्राम और ये होगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला का फिगर। एंड ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा ये हाइपरबोला को, और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा दिस टाइप ऑफ हाइपरबोला, ओके, व्हिच इज कॉल्ड एज conjugate hyperbola. So I hope these two are also clear for you. So यार कोनिक सेक्शन का इक्वेशन और ग्राफ यहाँ पे सभी को पता होना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एरियाज में इफ यू सी मेनी क्वेश्चंस में कोनिक सेक्शंस आर इन्वॉल्व, पैराबोला इज इन्वॉल्व, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल आर इन्वॉल्व। तो वहां पे इक्वेशन देख के आपको पता चलना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली वो उसका ग्राफ क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द करस्पॉन्डिंग ग्राफ फॉर दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। सो आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर फॉर यू। तो सर्कल के बारे में हमने डिस्कस किया है, पैराबोला हो गया, एलिप्स भी हो गया, हाइपरबोला भी हो गया। इन एडिशन टू दिस कोनिक सेक्शंस you also have to know the graphs of some standard function। स्टैंडर्ड फंक्शंस मतलब यार आप देखो, मॉड्यूलस फंक्शन एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। देखो y is equal to modulus of x का ग्राफ is going to look something like this, where this line is y is equal to x. This line is going to be given by y is equal to minus x. So modulus of x का graph तो definitely you have to know that everyone. Then other than y is equal to modulus of x, you also have the greatest integer function. And greatest integer function का graph कुछ ऐसे दिखेगा ना यहाँ पे. So this is how the graph of greatest integer function is going to look like. And other than greatest integer function यार आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ ऐसे दिखेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में y is equal to e raised to x का ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा गाइस, एंड y is equal to e raised to minus x का ग्राफ इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, ओके। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको e raised to x एंड e raised to minus x आपको दोनों ग्राफ रिमेंबर करना है गाइस। एंड ऑल्सो as we are discussing the exponential function, guys आपको logarithmic function का ग्राफ भी एक आइडिया होना चाहिए। So this is how the graph of log x base is going to look like. And let me tell you guys, अगर आपको log x to the base a where a is going to lie between 0 to 1, अगर आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है, the graph is going to look something like this। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो यार ऐसे दिखेगा ग्राफ y is equal to log x base a, जहां पे a का वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगा ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू एवरीवन, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू द लॉगरिथमिक फंक्शन। नाउ एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे तो नहीं होगा कि आपको कोई भी इक्वेशन मैंने दे दिया, आपको उसका ग्राफ पता है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि whenever I give you इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैंने ये टाइप ऑफ इक्वेशन दे दिया y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग बता दो, कैन यू टेल मी यार इसका ग्राफ क्या होगा, हाउ डज द ग्राफ लुक लाइक फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। बिकॉज यू सी इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड इक्वेशन, मतलब ये कोई सर्कल या पैराबोला या हाइपरबोला या एलिप्स का इक्वेशन तो नहीं है, और कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन भी नहीं है यहाँ पे, मतलब स्टैंडर्ड फंक्शन का इक्वेशन भी नहीं है ये तो यहाँ पे। सो ऐसे टाइप ऑफ इक्वेशंस के लिए अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और लेट अस से एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, तो गाइस देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच यू कैन कीप इन योर माइंड टू ड्रॉ द रफ ग्राफ ऑफ एनी इक्वेशन। Okay, so first let me discuss those points with you, and then using those points let me draw the graph of this everyone, okay। So this looks interesting, right? So I mean ये सभी के दिमाग में ये डाउट कभी भी रहता है कि सर ऐसे टाइप ऑफ इक्वेशंस का ग्राफ कैसे ड्रॉ करूं मैं, इसका कोई टेक्निक है? हाँ टेक्निक है, एक टेक्निक है। लेट मी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट। तो यार पहला तो क्या करेंगे, अगर आप कोई भी इक्वेशन में, अगर आपको ओनली पावर्स ऑफ इवन पावर्स ऑफ y दिखेगा, इन दैट केस रिमेंबर गाइस वो वाला इक्वेशन का करस्पॉन्डिंग ग्राफ सिमेट्रिक होगा x एक्सिस से। इसका बेस्ट एग्जांपल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का इक्वेशन। अगर आप y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यार आपको पता है ना ये तो पैराबोला इंडिकेट करेगा, एंड यार ये पैराबोला सिमेट्रिक होगा x एक्सिस से, यस और नो? सो रिमेंबर, अगर आपके कोई भी इक्वेशन में अगर आपके पास सिर्फ
इवन पावर्स ऑफ y है, तो वहां पे गाइस वो जो भी ग्राफ मिलेगा इट्स गोइंग टू बी सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, अगर इक्वेशन में ओनली इवन पावर्स ऑफ x है, नॉट इवन पावर्स ऑफ y, अगर ओनली इवन पावर्स ऑफ x आर देयर इन दैट इक्वेशन गाइस, देन रिमेंबर यार वहां पे क्या होगा बेसिकली कि आपको जो भी ग्राफ मिलेगा ना, graph is going to be symmetric about which axis? About the y axis everyone। इसका बेस्ट एग्जांपल x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। मतलब अगर आप ये वाले इक्वेशन देखेंगे गाइस, द इक्वेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, आपको पता है ये तो एक पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा जिसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, राइट? एंड यू कैन क्लियरली सी दैट द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस? यार ये सिमेट्रिक है अबाउट द y एक्सिस। सो whenever any equation is going to contain even powers of x, तो बेसिकली वहां पे क्या होगा एवरीवन? वेल आपको जो भी ग्राफ मिलेगा फॉर दैट पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ओके, वो ग्राफ होगा सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस? अबाउट द y एक्सिस। ना कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि वो वाले इक्वेशन में यार वो पावर ऑफ एक्स एंड पावर ऑफ वाई दोनों इवन है, मतलब एक्स का पावर देखो वाई का पावर देखो, दोनों भी इवन है। तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस, वेल वॉट एवर ग्राफ यू आर गोइंग टू गेट, वो ग्राफ होगा सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल, अब सर्कल ले लो यार, सर्कल का इक्वेशन ले लो, नहीं तो हाइपरबोला का इक्वेशन ले लो, एलिप्स का इक्वेशन ले लो। फॉर एग्जाम्पल आपने एलिप्स का इक्वेशन ले लिया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको पता है इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा ना, यहाँ पे एवरीवन द ग्राफ इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। अगर आप देखेंगे गाइस यार ग्राफ तो सिमेट्रिक है अबाउट बोथ द एक्सिस। तो रिमेंबर दैट अगर एक्स एंड वाई का पावर्स दोनों इवन है, then the graph is going to be symmetric about which one? About the both the axis। and then अगर x and y इंटरचेंज करेंगे एक इक्वेशन में, एंड इफ यू एंड अप गेटिंग द सेम इक्वेशन, इन दैट केस वो जो भी ग्राफ होगा ना वो इक्वेशन का, दैट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y is equal to x everyone। so these are the 4 points जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा how does the graph look like। ग्राफ सिमेट्रिक होगा कौन से एक्सेस के, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस का या वाई एक्सेस का, या वाई इज इक्वल टू एक्स का, बोथ द एक्सेस का सिमेट्रिक कहाँ पे होगा, आपको एक आइडिया पता चल जाएगा। इन एडिशन टू दिस आई विल आल्सो टेल यू 3 मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा ग्राफ कैसे दिखेगा, रफ ग्राफ कैसे दिखेगा वो पर्टिकुलर इक्वेशन का। तो यार वो तीनों मेथड, मतलब ये 3 पॉइंट, एक्स्ट्रा 3 पॉइंट क्या होगा कि लेट अस से आपके पास तो फंक्शन अवेलेबल है, फंक्शन मतलब वो इक्वेशन अवेलेबल है, सो दैट इज y इज इक्वल टू, लेट अस से द इक्वेशन इज अवेलेबल फॉर यू। तो गाइस आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि यू फाइंड आउट dy बाई dx, ओके, अब dy बाई dx निकालो एंड देखो कि वो जो भी इक्वेशन दिया है ना और जो भी फंक्शन दिया है ना, अब निकालो वेदर दैट इज गोइंग टू बी एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अब निकालो मतलब अब फाइंड करो यार वो वाले फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, यू बेसिकली फाइंड इट आउट। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा हाउ डज द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक, ओके। आप अगर चाहिए तो यू कैन ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू, मतलब कहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू, कहाँ पे मिलेगा मिनिमम वैल्यू, आप वो भी निकाल सकते हैं। एंड ऑल्सो इन एडिशन टू दिस वन मोर पॉइंट इज दैट एट एक्स इज इक्वल टू, मतलब एट एक्स एंड वाई एक्सिस, एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अगर कर्व इंटरसेक्ट करेगा, you find out the point where it is intersecting everyone। Hello Sunil, good evening Sunil, how are you man? I'm fine after a long time, how are you? So at x axis and y axis, okay, आप लोग क्या करेंगे, वो जो आप जहाँ पे भी वो कर्व इंटरसेक्ट करेगा अब वो वाले पॉइंट्स निकालो। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट अब देखो एक्सटेंडिंग टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंफिनिटी के लिए व्हाट इज y बेसिकली बिकमिंग। So these are the 3 additional points in addition to these 4 points which you can use, from which you can estimate, which we can idea, आपको एक idea मिल जाएगा यार
ग्राफ कैसे दिखेगा एवरीवन। ओके, सो नाउ आई टोल्ड यू कि हम ये वाले कॉन्सेप्ट यूज करके ये y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के ग्राफ को हम लेट अस ट्राई टू एस्टिमेट द ग्राफ, लेट अस ट्राई टू गेट अ रफ डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ओके, सो यार इसके लिए हम एक काम करेंगे एवरीवन, लुक एट दिस। सो आई हैव दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एवरीवन। सो फर्स्ट थिंग, अगर आप ये इक्वेशन देखेंगे तो पहला तो आपको ये पॉइंट डेफिनेटली आपको ये स्ट्राइक करेगा, ये वाला पॉइंट तो स्ट्राइक करेगा कि यार ये वाले इक्वेशन में, इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन आई कैन से दैट द पावर ऑफ एक्स इज इवन, राइट एवरीवन। हेलो जानू, गुड इवनिंग जानू। तो सुन लो यहाँ पे, आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें ड्रॉ करना है। So everyone concentrate. See, let us see how to draw this one. So the first condition, or I can say the first conclusion I can make here just by seeing the equation is, यार सभी का पावर मतलब if you see here x के पावर तो even है, the powers of x are even, only the powers of x are even। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका ग्राफ जो भी होगा यार वो डेफिनेटली सिमेट्रिक होना चाहिए। about which axis? Well, about the y-axis everyone. So I can say this is the first conclusion। यार second conclusion क्या हो सकता है? अब देखो x tending to infinity के लिए, in fact plus or minus infinity ले लो, y is going to be tending towards which value everyone? यार y will be tending towards 0। Okay, I can take that conclusion from the same equation। And third condition या third conclusion which we can make is, which we can derive is, इसका मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट के पास हो सकता है। गाइस सोचो, आप लॉजिकली सोचो, मतलब कॉमन सेंस का बात है यहाँ पे। इफ यू सी इन प्लेस ऑफ एक्स अदर देन जीरो, आप कोई भी नंबर पुट करो यार, आई कैन से वॉट एवर रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट इन द डिनोमिनेटर, it is always going to be greater than 1। yes or no, agreed everyone? I can tell you 1 plus x square में अगर x के प्लेस में other than 0 if you put any other number, ये definitely greater than 1 होगा। so what does that mean? अगर आप इसको एक maximum value, if you want to find out the maximum value of y, it is only going to be possible when x is going to be 0। देखो यार x equal to 0 के पास denominator 1 बनेगा, and if denominator is minimum at x equal to 0, well y is going to become maximum। for other values of x I can tell you denominator तो minimum नहीं होगा, क्योंकि at x equal to 0 only denominator is going to become minimum, तो वहां पे y maximum होगा। so at x equal to 0 I can tell you आपको maximum value of y मिलेगा जो कि 2 होगा। so these are the three conclusions which we can make just by seeing the equation। तो अभी यार ये तीनों conclusion से can we draw the diagram? Can we draw the diagram of this particular curve? Well, we can do that। well, to do that guys, very simple। देखो यार मैं यहाँ पे एक अच्छा सा ग्राफ बना लेता हूँ for the y is equal to 1/1 y is equal to 1/1 plus x square। so first condition, यार ग्राफ सिमेट्रिक होना चाहिए y axis पे। second condition, for x tending to positive or negative infinity, y should be tending to 0। x equal to 0 के पास y का वैल्यू 2 होगा। तो पहला हम यहाँ पे let me take y is equal to 2 at x is equal to 0। तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा एंड फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक होगा। so I can say it's going to be symmetric, मतलब it's going to be in this way। and for x tending to infinity, y is tending to 0, मतलब यहाँ पे you see the x-axis and the graph of y is equal to this particular function, y by 1 plus x square, they're going to run parallel to each other, right? So ये दोनों asymptotes बनेगा यहाँ पे। Similarly यहाँ पे भी the same logic, you see यहाँ पे for x tending to minus infinity, y will be tending to 0। तो यहाँ पे भी similarly this is how the graph you're going to get। तो see guys, this is the graph of finally ये तीनों कंडीशन मिला के हमें एक रफ डायग्राम मिल गया y is equal to 1/1 plus x square का, and this is how the graph is going to look like। तो समझ में आ गया सभी को यहाँ पे?
how to basically find out the graph of an equation given for you. So मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करना है, एंड एरियाज वाले क्वेश्चन में एग्जैक्ट वाले ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी नहीं है गाइस। ओके, अगर आपको एक रफ आइडिया भी होगा वो ग्राफ का, वो वाले इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग ग्राफ का एक रफ आइडिया भी होगा, आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू डू द क्वेश्चन। ओके, सो अगेन आई एम टेलिंग यू दिस पॉइंट गाइस, लिखना है तो लिख लो। ओके, और कीप दिस इन योर माइंड दैट एरियाज के क्वेश्चंस में डेफिनेटली आपको ग्राफ ड्रॉ करना ही करना है पहला, and then you have to do the question. Without drawing the graph, don't do it directly. There are like 99% chances that you would mess up the question. Okay, so with this particular concept, matlab with this particular knowledge of whatever we have discussed on the curves of common curves, I mean the graphs of common curve and the standard functions, यार अभी हम स्टार्ट करेंगे एरियाज का चैप्टर। तो एरियाज के चैप्टर में आपके पास दो इक्वेशन होगा। ओके, मेन इक्वेशंस दो होगा। आई टेल यू व्हाट आर दोस टू इक्वेशंस फर्स्ट, एंड देन इसमें मैं बता दूंगा यार कि which are the points which you have to remember definitely. Okay, so everyone look at this particular page, आपको यहाँ से पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। ओके, मतलब ये वाला चैप्टर बहुत सिंपल है, इसमें इतना कॉन्सेप्शुअल थिंग्स, कॉन्सेप्शुअल पार्ट इतना ज्यादा नहीं है गाइस ये वाले चैप्टर में, बट स्टिल इट्स वेरी लॉजिकल चैप्टर, दैट्स व्हाई इट्स माय फेवरेट। ये वाला चैप्टर तो मेरा फेवरेट है, इसमें लॉजिकल पार्ट बहुत ज्यादा होता है। सो एवरीवन लिसन टू दिस केयरफुली। तो पहला तो आप लोग ये वाला डायग्राम देखो, तो यहाँ पे मैंने ले लिया यार एक्स एक्सिस, मैंने ले लिया यहाँ पे, और ये होगा आपका वाई एक्सिस यहाँ पे। नाउ लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन दिस वे। लेट अस से एक ग्राफ मैंने ले लिया, एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। ओके, बिटवीन a टू b, बिटवीन x इज इक्वल टू a, लोअर लिमिट हो गया, x इक्वल टू b, ये हो गया आपका अपर लिमिट। सो क्वेश्चन ये होगा कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड x एक्सिस, ओके, बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो बेसिकली यार आपको ये वाले एरिया निकालना है। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे येलो वाला रीजन, आपको ये वाले एरिया आपको फिगर आउट करना है यार, क्या होगा इसका एरिया। ओके, सो टू डू दिस क्वेश्चन व्हाट यू कैन डू हियर इज दैट एवरीवन रिमेंबर, एरिया के क्वेश्चन में आप दो स्ट्रिप से कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए। यू कैन यूज टू स्ट्रिप्स यार, एक होगा वर्टिकल स्ट्रिप, एक होगा हॉरिजेंटल स्ट्रिप। ओके, सो आपको थोड़ा क्लैरिटी और लेट अस से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये वर्टिकल स्ट्रिप क्या है, हॉरिजेंटल स्ट्रिप क्या है। आप टेल दिस इन अ वेरी डिटेल वे। तो सब लोग सुन लो यहाँ पे कि यार वर्टिकल स्ट्रिप लेने से क्या होगा कि देखो यार, ये वर्टिकल स्ट्रिप का जो भी विड्थ होगा ना, लेट अस से दिस इज गोइंग टू बी गिवन बाय dx, एंड इसका जो भी ये वाला लेंथ होगा या हाइट भी बोल सकते हैं, इस ये होगा यहाँ पे लेट अस से y। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप, लेट अस से दैट, लेट अस अप्रोक्सीमेटली से यार ये स्ट्रिप एक रेक्टेंगल होगा, तो इसका एरिया क्या होगा, y इंटू डी एक्स होगा एवरीवन। एंड इफ यू इंटीग्रेट दिस टर्म between a to b, guys, this is going to basically give you the area of which one, the area of this entire region. Okay, so यार vertical strip, so whenever you want to calculate the area of this region, आपको vertical strip लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आपने एक vertical strip ले लिया तो वहां पे क्या होगा बेसिकली कि you are going to get this type of equation। remember, तो स्ट्रिप के हिसाब से आप इक्वेशन डिसाइड कर सकते हैं। सो अगर आपने एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया, आपको ये टाइप ऑफ इक्वेशन मिलेगा, a is equal to integration a to b y into dx, you get this type of equation everyone। okay, let us take another example everyone। अभी मैं और एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा, आपको यहाँ से और दूसरे वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्लैरिटी मिल जाएगा। देखो यार, ये हमारा लेट अस से x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। नाउ लेट मी ड्रॉ द ग्राफ इन दिस वे। चलो यार, ये होगा एक फंक्शन का ग्राफ, लेट अस से y इज इक्वल टू, नॉट y इज इक्वल टू, लेट अस से ये वाले फंक्शन होगा x इज इक्वल टू f ऑफ y। ओके, एंड लेट मी टेक द ग्राफ बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो लेट अस से यार ये होगा y इज इक्वल टू a एंड ये होगा y इज इक्वल टू b।
अब अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ गया कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय ये वाला कर्व व्हिच इज x इक्वल टू f ऑफ y एंड द y एक्सिस between y is equal to a and y is equal to b. So basically क्वेश्चन में what am I asking you is that आपको ये वाले एरिया निकालना है, द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व x इक्वल टू f ऑफ y with respect to which axis everyone यार, with respect to y axis between y is equal to a to y is equal to b. तो अगर आपको यहाँ पे एरिया निकालना है, what you can do is that guys you can use a horizontal strip in this case. यहाँ पे आपको vertical strip यूज नहीं करना है, क्योंकि देखो यार vertical strip यूज करने से, अब देखो the vertical strip is not even touching the curve, तो इसको यूज करने में क्या होगा, there is no use here, right? So what you can do here is that आप यहाँ पे एक horizontal strip ले सकते हैं. So horizontal strip का let us say इसका width होगा, let us say this width is going to be given by dy everyone, okay? और इसका ये जो भी height होगा, let us say this height is going to be, let us say this height is going to be x. तो यहां से यार बता दो अप्रोक्सीमेट एरिया क्या होगा ये स्ट्रिप का. अगर आप इसको आप रेक्टेंगल अज्यूम करेंगे तो यहां से आपको एरिया ऑफ द स्ट्रिप मिलेगा x into dy, and if you integrate this term between a and b, you are going to get the area of this yellow region everyone. So this is another type of equation which you are going to get. अगर आप एक horizontal strip लेते हैं एरिया निकालने के लिए, तो वहां पे everyone listen to this is the area you're going to get, this is the equation you're going to get everyone. And if you take a vertical strip everyone, आपको ये टाइप ऑफ इक्वेशन मिलेगा. तो ये क्लियर हो गया गाइस एवरीवन. सो डिपेंडिंग अपॉन द रीजन आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, शुड आई गो विथ the vertical strip or should I go with a horizontal strip? Okay, so if you go with a vertical strip you are going to get this equation. अगर आप एक horizontal strip लेते हैं you have to go with this particular equation everyone. Okay, so let me do one question for you. आपको question से ज़्यादा clarity मिलेगा, I know. So everyone look at this question. यार आप लोग ये वाले question देखो, ये वाले question से आपको ज़्यादा clarity मिल जाएगा ये topic के ऊपर. तो देखो यार, determine the area of the region bounded by y square equal to x and the lines x is equal to 1 and x equal to 4 and the x axis in the first quadrant. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट एज आई टोल्ड यू जो भी एरिया का क्वेश्चन है ग्राफ तो ड्रॉ करना है पक्का. तो ग्राफ ड्रॉ कर लो यहाँ पे गाइस. सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y square equal to x. So y square is equal to x का ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा. Y square is equal to x graph is going to be something like this. Okay, now you take the line x equal to 1 and x equal to 4. तो यार ये आपका x equal to 1 line है and this is going to be your x is equal to 4, and we need to find the area of the region which is bounded by this curve and this two lines and the x axis, and वो भी first वाले quadrant में. तो बेसिकली आपको ये वाले एरिया निकालना है गाइस. अंडरस्टूड एवरीवन? यू सी द येलो रीजन यहाँ पे, दिस इज द एरिया वी नीड टू फिगर आउट एवरीवन. तो कैसे कर सकते हैं, हाउ शुड वी फाइंड आउट दिस एरिया? वेरी सिंपल. आप सोचो ना यहाँ पे, शुड आई बी यूजिंग ए वर्टिकल स्ट्रिप और ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप? यार हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करेंगे डेफिनेटली, डजंट मेक एनी सेंस नो. यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने से इट्स नॉट गोइंग टू कवर दैट एरिया, इट्स नॉट इवन टचिंग द कर्व. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट मी गो विथ ए वर्टिकल स्ट्रिप. तो वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब क्या हो गया एवरीवन, आप लोग बता दो. सो ये आपका x इक्वल टू 1, ये आपका x इज इक्वल टू 4. सो व्हेन यू टेक ए वर्टिकल स्ट्रिप तो आपको एरिया निकालने के लिए यू हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x इनटू dx. आप ये टाइप ऑफ इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा. ओके, नाउ आपको डिसाइड, आपको तो पता है a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 4 होगा. तो f ऑफ x क्या है बेसिकली, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू x, तो यार y का वैल्यू आपको मिलेगा प्लस और माइनस रूट x. नाउ यू माइट बी थिंकिंग सर शुड आई टेक प्लस रूट x या माइनस रूट x? यार देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाले पार्ट का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू रूट x, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है.
So you have to go with y is equal to root x equation. So guys, I can tell you the area is going to be integration 1 to 4 f of x के place में root x into dx. This is what you are going to get everyone. So इसका वैल्यू निकालो, सिंपल सा इंटीग्रल है. अब इसको सॉल्व करो, इसका जो भी सॉल्यूशन मिलेगा that is going to be the right answer. So understood this question everyone? समझ में आ गया सभी को ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे? Anyone is having any more doubt in this question? So this is how you need to apply the concept everyone. So simple है ना? तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करो, रीजन निकालो जिसका एरिया हमें निकालना है, देन यू डिसाइड यार वर्टिकल स्ट्रिप यूज करना है या हॉरिजेंटल स्ट्रिप. अकॉर्डिंग टू दैट आपको पता चल जाएगा कौन से टाइप ऑफ इक्वेशन आपको मिलेगा, एंड फ्रॉम दैट यू आर गोइंग टू गेट द आंसर. सो आई होप this is clear for all the students out here. Okay, now let me also do another question जिसमें आपको y axis से related question भी हम करेंगे यहाँ पे, so that आपको पूरा clarity मिल जाएगा. Okay, so you see this question everyone. आप लोग ये वाले question देखो यार, ये वाले question में find the area between y equal to x square and the ordinates y is equal to 1 and y is equal to 3. तो basically हम यहाँ पे क्या करेंगे everyone? So first let me draw the graph. Okay, hello Raj, good evening Raj, good evening. So listen to this carefully. तो पहले ये वाले question में let us draw the graph of y equal to x square. Okay, so what am I going to get everyone? यार y is equal to x square का graph कुछ ऐसे दिखेगा, x square is equal to y का graph is going to be something like this, x square is equal to y. Okay, now everyone listen to this carefully. Between y is equal to 1 and y is equal to 3, तो यार ये y is equal to 1 है और ये होगा y is equal to 3. So this is your y is equal to 1, ये होगा y is equal to 3. So find the area of this curve between these two lines. तो basically हमें ये वाले एरिया निकालना है. What should we do here? This is the area we need to find in this particular case. Okay, तो कैसे निकालेंगे ये वाला एरिया, आप लोग बता दो. How should we find this area? So इसमें should we go with a vertical strip? No, इसमें हम horizontal strip यूज करेंगे. If you're going with the horizontal strip everyone, आप लोग बता दो what type of equation you need to take. यार आपको चलना है a is equal to integration a to b x into dy. You need to go with this type of equation. So I can write down area is going to be, the lower limit is 1, the upper limit is 3. So यहाँ से x in terms of y will be root y into dy. अगर आप इसको simplify करेंगे guys, आपको जो भी solution मिलेगा that is going to indicate the area of this yellow region. तो समझ में आ गया सभी को ये वाले क्वेश्चन में? तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. डायग्राम ड्रॉ करो, रीजन निकालो, जो भी रीजन है, जो भी एरिया ऑफ रीजन निकालना है, आप डिसाइड करो. वो एरिया निकालने के लिए शुड आई बी यूजिंग ए वर्टिकल स्ट्रिप और ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये वाले इक्वेशन के ऊपर, मतलब कौन सा इक्वेशन आपको मिल जाएगा उसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिल जाएगा. एंड गाइस बिफोर वी गो टू अनदर कॉन्सेप्ट, ओके एवरीवन, यार यहाँ पे यू डू नो दैट वी आर प्रोवाइडिंग दिस कोर्सेज फॉर योर जेईई प्रिपरेशन. अभी फरवरी में आपका एग्जामिनेशन है ना, एंड आपको रिवीजन भी करना है. सो आई होप दैट okay, I hope that guys all these videos are useful for you. If you find it very useful everyone, okay, यार like करना, share करना, subscribe करो if you have not subscribed to the channel, so that ये videos are going to reach maximum number of students everyone, and definitely it's going to be helpful for you. Okay, now everyone, one more important thing, यार अभी तक हमने functions complete किया है, limits भी complete किया है, डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट किया है, कंटिन्यूटी हमने कंप्लीट किया है, एंड ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंप्लीट किया है, इंडेफिनेट डेफिनेट. वी हैव कंप्लीटेड दिस मनी टॉपिक्स रिवीजन, एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स आर वेरी रेगुलर, अब देख रहे सारे वीडियोस को. अगर बीच में आप कोई भी टॉपिक मिस कर लिया,
ओके एंड लेट अस से दैट यू वांट टू गो थ्रू दैट टॉपिक वंस अगेन, और लेट अस से आपको कंटिन्यूटी में क्लैरिटी नहीं है, कंटिन्यूटी का टॉपिक आपने मिस कर लिया, एंड इफ यू वांट टू वॉच दैट लेक्चर वंस अगेन गाइस, आपके लिए वी हैव क्रिएटेड ए सेपरेट प्लेलिस्ट एवरीवन। द प्लेलिस्ट इज गोइंग टू बी JEE मतलब जीत की जंग का एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इफ यू जस्ट गो थ्रू द इफ यू जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट एवरीवन, आपको जीत की जंग का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। ओके मैथ्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारे के सारे वीडियोस मिलेगा टिल नाउ व्हाट एवर वी हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर रिवीजन कोर्स, आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएगा गाइस। ओके सो यू कैन गो थ्रू दैट। Okay, so I hope it's clear for you. So thank you so much everyone. Thank you. Who is this Xpros? यार आपका नाम नहीं पता है. That's your YouTube name. So anyway, I think see it doesn't depend. I think I'm already telling you that कि यार strength के ऊपर depend नहीं होगा. If the students, if let us say यार 10 बच्चे भी आ जाएंगे, okay, who are very serious, who are very serious for the JEE examination preparation, I'll be very much happy to help you out. Okay, मतलब यार if you are serious, if you are watching every video, then definitely strength तो आएगा. Don't worry about the strength of the students. वो तो आ जाएगा, बाद में आएगा, कभी भी वो तो आ जाएगा. Okay, but if you are really serious guys, then definitely I'm going to give my best so that यार फाइनल एग्जामिनेशन में आपका ही फायदा होगा वहां पे. ओके सो एनीवे let us start discussing another topic in a much more detail way. तो अभी देखो यार यहाँ पे, तो ये तो हो गया ना, तो आपको पता चल गया, आपको क्लैरिटी मिल गया ना यहाँ पे कि गाइस कौन सा इक्वेशन लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रीजन यू गॉट ना. कभी कभी ये वाले कॉन्सेप्ट में मतलब आपको लगता है कि सर इसमें ट्रिकी पार्ट क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल है, बट गाइस ट्रिकी पार्ट है ये वाले कॉन्सेप्ट में भी. वी हैव द ट्रिकी पार्ट. सो ट्रिकी पार्ट क्या होगा कि कभी कभी आपको ऐसे टाइप ऑफ इक्वेशंस भी मिल सकता है जिसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा. लेट मी टेल यू दैट गाइस, देखो यहाँ पे लेट अस से ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, एंड एक फंक्शन का, एक इक्वेशन का ग्राफ आपको कुछ ऐसे मिला है. लेट अस से द ग्राफ यू गॉट is in this particular way between the limit, let us say here between the limit x is equal to a to x is equal to b. okay so यार ये होगा आपका x is equal to a और ये होगा आपका x is equal to b everyone. okay now all the students यहाँ पे let us say ये ग्राफ होगा y is equal to f of x का. अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व between x is equal to a and x is equal to b with the x axis, I'm asking you find this area. ये वाले region का एरिया निकालो. That is what is the question given for you basically. Okay, तो इसमें मैं बोलूंगा कि यहाँ पे गलती क्या करेंगे आप लोग क्या करेंगे सर, ये तो सिंपल है, तो आप लोग कर लेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन a to b f of x into f of x into dx. But let me tell you this is not going to give you the right answer यार. ये रॉन्ग आंसर आपको दे देगा यहाँ पे, क्योंकि मैं बता दिया ऑलरेडी डेफिनेट इंटीग्रेशन में. इफ यू हैव मिस्ड दैट लेक्चर, आई हैव टोल्ड यू प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, प्लीज गो थ्रू दैट वंस अगेन. सो आई ऑलरेडी हैव मेंशन दिस टू यू कि यार डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे गाइज यहाँ पे लेट अस से ये एरिया a1 होगा और ये एरिया a2 होगा. यार ये डेफिनेट इंटीग्रल इसको a1 माइनस a2 से कंसिडर करेगा. What is this definite integral going to do when you find out integration a to b f of x into dx? It is going to consider it as a1 minus a2. But this is not the area which is required. No, मतलब एक simple सा example ले लो. Let us say एक let us say राजू भाई का property है, मतलब this guy is a very rich guy. Okay, और let us say एक main road है guys यहाँ पे, और main road के दोनों side, okay, let us say this side and this side, he is having a property, एक लैंड प्रॉपर्टी है जिसका इक्वल एरिया है. तो यहाँ पे एक उसका लैंड प्रॉपर्टी है, उसका भी एक यहाँ पे एक लैंड प्रॉपर्टी है, दोनों इक्वल एरिया से. ओके ना मैथमेटिकली अगर मैं बोलूंगा कि यार आप मेन रोड को एक्स एक्सिस ले लो. ओके मेन रोड को आप एक्स एक्सिस ले लो. नाउ टेल मी दिस पर्टिकुलर थिंग दैट अगर मैं पूछूंगा आपसे यार राजू का टोटल लैंड कितना है, राजू भाई के पास टोटल लैंड कितना है, तो आप लोग बोलेंगे a1 ये वाले एरिया प्लस ये वाले एरिया, राइट. a प्लस ए तो बोलेंगे ना आप यहाँ पे, जो आप बोलेंगे 2a है विच इज द टोटल एरिया विच इज देयर विद दिस राजू भाई,
राइट। आप तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि यार यहाँ पे a माइनस ए और ये होगा 0, तो राजू भाई के पास कुछ भी नहीं है, ये तो नहीं होगा ना, इट डजंट मेक एनी सेंस। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या करेगा कि व्हेन यू फाइंड इंटीग्रेशन a to b f of x into dx, it considers it in this way. So but this is not what is required for you, this is not the area that is required. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे guys, always remember to find the area in such type of situations guys, इसको आप कैसे करेंगे कि इसको आप स्प्लिट कर लो। लेट अस से दिस पॉइंट इज x इक्वल टू c। ओके, तो गाइज यहाँ पे पहला आप इंटीग्रेशन निकालो a टू c f of x into dx का। दिस इज फाइन, मतलब इसका जो भी वैल्यू निकल के आएगा ये पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, सो नथिंग टू डू विद दिस। नाउ when you find integration c to b f of x into dx, गाइस इसका जो भी वैल्यू निकल के आएगा ना, इसका प्रॉब्लम है, ये वैल्यू आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा गाइस। ओके, सो अगर नेगेटिव वैल्यू है तो क्या करेंगे आप वहां पे, वेल वी शुड नॉट टेक ए नेगेटिव वैल्यू। सो यार ये वैल्यू को आप मॉड के इनसाइड ले लो। व्हाट यू हैव टू डू एवरीवन, टेक दिस वैल्यू इंटीग्रेशन c to b f of x into dx inside the mod, so that क्या होगा, यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू भी मिलेगा, ड्यू टू दिस मॉड वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा एंड आपको मिल जाएगा यहाँ पे एरिया टू बी a1 plus a2। सो दिस इज द सॉल्यूशन यू आर गोइंग टू गेट एवरीवन। तो समझ में आ गया सभी को एवरीवन। सो दिस टाइप ऑफ सिनेरियोस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो व्हेनेवर यू ड्रॉ द ग्राफ, नो, अगर आपको ये टाइप ऑफ कर्व मिलेगा तो वहां पे बी केयरफुल, जो भी रीजन अबव द एक्स एक्सिस है उसका पॉजिटिव एरिया ही निकल के आएगा, तो वहां पे आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो भी रीजन एक्स एक्सिस के बिलो है, अगर आप उसका एरिया निकालेंगे वो डेफिनेटली नेगेटिव एरिया होगा। तो इसको आप क्या करेंगे यार, वो वाले एरिया को आप मॉड के अंदर ले लो, सो दैट वो नेगेटिव एरिया पॉजिटिव एरिया में कन्वर्ट होगा एंड वहां से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, सो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी के लिए यहाँ पे, आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। तो एक काम करेंगे यार, आपको एक क्वेश्चन दिखा दूंगा, वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ओके, यू सी दिस क्वेश्चन एवरीवन, आप लोग ये वाले क्वेश्चन देखो। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y is equal to x into x minus 3 and this is the points are given for you, x equal to 0 and x equal to 3। तो यार कैसे करेंगे ये वाले क्वेश्चन, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है। फर्स्ट लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। तो यहाँ पे y और ये होगा आपका x एक्सिस। लेट मी टेक, ये वाला पॉइंट होगा x इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 3। ओके, सो फर्स्ट लेट मी प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। यार बहुत सिंपल है, अगर आपको प्लॉट करना है ना y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 3, यार ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। So what will be the shape of parabola? Very very simple. You see, अब कोई भी वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 3 ले लो, y तो कभी भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे y के वैल्यू सारे पॉजिटिव है। अगर आप कोई भी वैल्यू 0 to 3 के बीच में लेते हैं, y का वैल्यू कभी भी नेगेटिव ही होगा, तो यहाँ पे y का वैल्यू नेगेटिव। अगर आपने कोई भी वैल्यू ऑफ x लेस देन 0 ले लिया, y के वैल्यूज कभी भी पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पे सारे के सारे y वैल्यूज पॉजिटिव है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यार आपको ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा ना, पैराबोला है, जो ऐसे टाइप ऑफ पैराबोला आपको मिलेगा, यू गेट दिस टाइप ऑफ पैराबोला एवरीवन, राइट। तो इसमें आप क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि हमें ये वाला एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3, मतलब आपको ये वाले एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये वाले निकालने के लिए गाइस डेफिनेटली आपको एक वर्टिकल स्ट्रिप लेना पड़ेगा। तो यार एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f of x into dx, आपको ये वाले इक्वेशन सी आपको यू हैव टू गेट द सॉल्यूशन। सो क्या मिलेगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यार लोअर लिमिट होगा 0, अपर लिमिट होगा 3, f of x के प्लेस में आपने ले लिया x into x minus 3 into dx। तो दैट्स इट, और कुछ ज्यादा करेंगे यहाँ पे, वेल अगर आप इसका वैल्यू निकालेंगे, वी डू नो, देखो यार रीजन एक्स एक्सिस के नीचे है, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस पॉइंट कि अगर रीजन एक्स एक्सिस के नीचे है तो वहां पे आपको जो भी वैल्यू मिलेगा इंटीग्रल का, इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव। तो एरिया नेगेटिव नहीं बन सकता भाई, नहीं हो सकता है ना। तो वहां पे हम क्या करेंगे यार, इसका जो भी वैल्यू है, लेट मी टेक दैट इनसाइड द मॉड, सो दैट जो भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगा आपको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा
and you get the right answer. So understood this question everyone? किसी का कोई भी डाउट है ये वाले क्वेश्चन में? I hope this question is clear for all the students out there. And ये वाले लॉजिक आप with respect to y-axis भी कर लेते हैं, like with respect, if you're going with the horizontal strip also, this logic is going to remain the same कि negative axis, not negative axis man, x axis के नीचे okay, जो भी area होगा it's always going to be a negative area. मतलब अगर आप इंटीग्रेशन निकालेंगे वो कर्व का in that particular region, वो नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगा. So always take it inside the mod. So I hope this is clear for everyone. Okay. Now यार अभी हम क्या करेंगे guys? Let me do another question. और एक question कर लेते हैं. Guys actually ये chapter में as I told you यार concepts बहुत कम है. Okay. So the more number of questions you do, the more clarity you get in this particular chapter. Okay. तो देखो यार और एक question हम कर लेंगे यहाँ पे. देखो find the area bounded by y is equal to sin x between x equal to 0 and x equal to 2 pi. तो कैसे करेंगे यहाँ पे? सिंपल सा लॉजिक है. पहला तो यार मैं लिख दूंगा यहाँ पे x axis and y axis. Okay, now let me draw the graph of y is equal to sin x between 0 to 2 pi. What will be the graph everyone? Well, the graph is going to look something like this, right? Between 0 to 2 pi, यार ये 0 होगा, ये pi होगा, ये 2 pi होगा. ऐसे ही होगा ना ग्राफ? y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे ही दिखेगा ना? हाँ डेफिनेटली सर ऐसे ही दिखेगा. ओके, तब हमें ग्राफ निकालना है, मतलब एरिया निकालना है. तो दिस इज द एरिया वी नीड टू फाइंड आउट. यहाँ पे ये क्लासिकल केस हो गया. तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे गाइस? बेसिकली आई टोल्ड यू दिस. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? एरिया 0 टू पाई के बीच में यू टेक साइन एक्स इंटू डी एक्स. इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यार ये वाले एरिया, ये वाले रीजन तो अबव एक्स एक्सिस है. सो नो इश्यू विद दिस. अगर आप पाई टू 2 पाई के बीच में चलेंगे आप यहाँ पे, तो पाई टू 2 पाई के बीच में sin x into dx आपको मिलेगा. यार ये रीजन इज बिलो द एक्स एक्सिस एंड यू डू नो इफ यू फाइंड इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई sin x into dx, इसका वैल्यू क्या होगा? वेल डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी ए नेगेटिव वैल्यू. तो यार आप क्या करेंगे यहाँ पे? लेट मी टेक दिस इनसाइड द मॉड. तो यहाँ पे ये सेकंड वाले इंटीग्रल को यू टेक इट इनसाइड द मॉड सो दैट ये जो भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगा ना, इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई sin x into dx, वो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट होके आपको सही आंसर मिलेगा. सो आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन. यार ये इंटीग्रल्स में सॉल्व नहीं कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी हमने कई सारे इससे कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स भी हमने सॉल्व किया था प्रीवियस वाले सेशंस में. ओके, सो आई होप I'm assuming that you're in a position where you can do this type of simple integral solution. You can find out. So I'm basically leaving that for you guys. आप लोग बाद में कर लेना. Okay, but the main topic, the main concept, whatever is important, I'm discussing all those things for you. Okay, so चलो यार, I hope this is clear for all the students out there. तो अभी हम क्या करेंगे? Now let us go to another question. Okay, तो यार आप लोग ये वाले क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे. Now do we have another question? Yeah, let me go to another question guys. So ये वाले क्वेश्चन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है. So now you see this question everyone. तो यार ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? The area bounded by y equal to sin inverse x. ये लाइन भी दे दिया x equal to 1 by root 2 और x axis what is that going to be? तो इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट यार ग्राफ तो ड्रॉ करना पड़ेगा sin inverse x का, x equal to 1 by root 2 का और x axis का. So first thing यार sin inverse x का ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, right? Graph of sin inverse x is going to look something like this in the principal value branch. Okay, so यार ये होगा -1, ये होगा 1 एंड फॉर x इक्वल टू 1 आपको पता है आपको मिल जाएगा y का वैल्यू, y इक्वल टू साइन इनवर्स x वाले इक्वेशन से आपको मिलेगा ये पाई बाई 2 एंड फॉर x इक्वल टू -1 आपको y का वैल्यू मिलेगा माइनस पाई बाई 2 एवरीवन. ओके, चलो तो अभी हम क्या करेंगे? ये तो क्लियर है सभी के लिए, राइट? नाउ फ्रॉम हियर let us draw the line x equal to 1 by root 2 also. तो यार x equal to 1 by root 2 तो कुछ ऐसे ही दिखेगा. This is the graph of x is equal to 1 by root 2 and this is going to be the x-axis. So if you observe guys, this is the area, this is the area, this is the region we are going to get bounded by sin inverse x.
1/√2 एंड एक्स एक्सिस। सो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि हमें ये वाले एरिया का, ये वाले रीजन का एरिया निकालना है। आई थिंक थोड़ा छोटा हो गया, बट गाइस एडजस्ट कर लेना, और एल्स विल डू वन थिंग, मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ गाइस, सो दैट इट विल बी वेरी मच क्लियर फॉर यू। सो कैन यू सी हियर एवरीवन, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे सभी को? So this is the region you're going to get. Okay, this is the region for which we need to find out the area, everyone. Okay, now how do we do this, everyone? Let me just give me 1 minute, guys. यार क्या हो गया, थोड़ा स्टक हो गया, just give me 1 minute. uh okay guys, just give me 1 minute. I think this is, ये open board suddenly work नहीं कर रहा है. ओके गाइस, या सॉरी फॉर दैट, थोड़ा ये वाले सॉफ्टवेयर में कुछ कट आ गया था. एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द सेशन. सो आई होप इट्स क्लियर फॉर यू. तो हमें ये वाले एरिया निकालना है. तो ये एरिया निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन होगा? वेल, यू आर गोइंग टू गो विद द वर्टिकल स्ट्रिप. तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/√2. ये तो 1/√2 होगा, तो 0 से लेके 1/√2. ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. तो यार एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे sin inverse x into dx. So all you have to do is solve this integral, everyone. तो solve करो यहाँ पे. अगर आपको ये integral solve करना है, you can use integration by parts in this case, everyone. So according to integration by parts, you can see clearly that यार ये आपका u होगा, ये आपका v होगा. If you apply integration by parts, tell me what is the equation you're going to get, what is the result you're going to get? You will get u into integration v. तो आपको x into sin inverse x मिलेगा यहाँ पे. Right, everyone? You're going to get x into, you're basically going to get x into sin inverse x in the limit 0 to 1/√2 minus whole integral 0 to 1/√2. यहाँ पे देख सकते हैं it's going to be sin inverse x differentiation 1/√1 minus x square into x into dx. Okay, now all you have to do is solve those two integrals, everyone. मतलब already हमने फर्स्ट वाले इंटीग्रल में, मतलब ये वाले टर्म में, you put the limits. I'll get a is equal to 1/√2 into sin inverse 1/√2 is going to be pi by 4. And if you put x equal to 0, यार आपको 0 मिल जाएगा यहाँ पे. And if you want to solve the second integral now, guys, you can apply which concept? You can apply the concept of method of substitution. So according to method of substitution, देखो यार क्या मिलेगा आपको. तो ये सेकेंड वाले इंटीग्रल में what you can basically do is that you can take 1 minus, you can basically take 1 minus x square is equal to t. तो यहां से आपको minus of 2x into dx का वैल्यू क्या मिलेगा? dt मिलेगा. So what is x into dx going to be? dt by -2. तो यार आपको मिलेगा यहाँ पे +1/2 इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स के प्लेस में dt डिवाइडेड बाई ये होगा t रेस टू 1/2. फॉर x इक्वल टू 0 यार t का वैल्यू होगा 1. फॉर x इक्वल टू 1/√2, 1 minus 1/2 यार t का वैल्यू होगा 1/2. लेट मी डू द सिंप्लीफिकेशन एंड सी व्हाट आंसर आई एम गोइंग टू गेट हियर. सो आपको मिलेगा एरिया इज इक्वल टू पाई बाई 4 into √2 minus. Okay, and what is this one going to be, guys? T raised to -1/2 का यहाँ पे प्लस होगा, +1/2 into t raised to -1/2 का इंटीग्रेशन होगा t raised to 1/2 divided by 1/2. ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा. And if you put the limits, so see the final solution you are going to get in this case, everyone. So if you put the limits 1 to 1/2, you are going to get the area as pi by 4 into √2 plus ये होगा 1/√2 minus of 1. This is the solution you're going to get. And if you see the options, everyone, option D होगा right answer. So I hope this question is clear for all the students out there. And यार एक बात बता दूंगा, I'll tell you one point. ये कैसे भी यार जेई एग्जामिनेशन के लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी यूजफुल, बट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होगा. स्पेशली सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है तो वहां पे यूजफुल होगा. गाइस, कोई भी एरिया क्वेश्चन पर आपको जो भी आंसर मिलेगा, यार आंसर में डेफिनेटली मेंशन स्क्वायर यूनिट्स. ओके, जो भी एरिया क्वेश्चन है, व्हेनेवर यू फाइंडिंग ए एरिया, ओके, जो भी आपको आंसर मिलेगा, so वहां पे what are you going to do, everyone? As I told you, वहां पे you have to basically mention it as
स्क्वायर यूनिट्स एवरीवन, आंसर में आप लिख लेना स्क्वायर यूनिट्स अलोंग विद द वैल्यू विच यू गेट। अगर नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली यार मार्क्स कटेगा, हाफ मार्क और 1 मार्क इज गोइंग टू बी डिडक्टेड, सो डोंट डू दैट। ओके, मतलब अभी तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव था। एनीवे दिस पार्ट वाज नॉट इंक्लूडेड, राइट? इंटीग्रल कैलकुलस तो आपके टर्म 1 में नहीं है, वो टर्म टू वाले सिलेबस में था। So term 2 can be subjective, we don't know yet, but it can be subjective। तो अगर subjective होगा तो एरिया क्वेश्चन मिलेगा, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, एरिया के क्वेश्चन का फाइनल आंसर में साइड पे आप स्क्वायर यूनिट्स लिख लो, डोंट फॉरगेट इट। Okay, so I hope this is clear for everyone out there. So now let me go to another concept everyone, मतलब another question in fact। आप लोग ये वाले क्वेश्चन देखो, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व mod x plus y is equal to 1 and x axis, ओके, व्हाट इज दैट गोइंग टू बी। तो यहाँ पे गाइस आप क्या करेंगे गाइस, देखो यार mod x plus y is equal to 1 का आपको दो लाइन मिलेगा यहाँ से, डिपेंडिंग अपॉन वेदर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। अगर आपने x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लिया तो आपको ये टाइप ऑफ इक्वेशन मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, आपको ये वाला लाइन मिलेगा। अगर आपने x लेस देन 0 ले लिया तो वहां पे आपको ये इक्वेशन मिलेगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एवरीवन। ओके, नाउ आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ये ग्राफ देखेंगे यहाँ पे, ओके, लेट अस से आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है। नाउ फर्स्ट आप प्लॉट करो, you plot the graph of x plus y is equal to 1 and that too in the positive x axis side। यार इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा ना, वो तो एक लाइन होगा, लीनियर इक्वेशन है, x plus y is equal to 1 जो पास होगा 1,0 and 0,1 से। so I can say this line is representing the equation x plus y is equal to 1। okay, and आप दूसरे वाले लाइन भी ले लो, minus x plus y is equal to 1। So on the negative side, on the negative x-axis side, if you take this equation minus x plus y is equal to 1, यार इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगा ना आपको, which is going to be passing through 0,1 and -1,0, and ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा ये वाले इक्वेशन को, y is equal to 1 plus x वाले इक्वेशन को। Now according to the question हमें एरिया निकालना है जो एरिया बाउंडेड है बिटवीन दिस टू लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो यार हमें ये वाले एरिया निकालना है, राइट? वी नीड टू बेसिकली फिगर आउट द एरिया ऑफ दिस रीजन, आपको ये वाले एरिया निकालना है गाइस। सो कैन यू टेल मी एनीवन कैसे निकालेंगे आप एरिया यहाँ पे, हाउ डू यू फाइंड आउट दिस एंटायर एरिया इन दिस केस एवरीवन? सो फर्स्ट थिंग एवरीवन यहाँ पे, और एक डिफरेंट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दूंगा, एरिया निकालने के लिए एवरी टाइम देयर इज नो नीड फॉर यू टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अगर जो भी रीजन आपको मिला है वो एक स्टैंडर्ड शेप में है, लेट अस से इन दिस केस यू गॉट द रीजन एंड द रीजन, इफ यू लुक एट द रीजन यू सी इट्स अ सर्कल, सॉरी इट्स अ ट्रायंगल एवरीवन, राइट? ये रीजन जो भी मिला है हमें यहाँ पे, ये तो एक ट्रायंगल है एंड हमें ऑलरेडी पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे आपको तो एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू बेस इज गोइंग टू बी 1 plus 1 2, यार हाइट होगा 1 2 2 ट्रायंगल होगा, तो एरिया मिलेगा 1 square unit। and if you see the options everyone, option A is going to be the right answer। तो ये वाले क्वेश्चन से दिस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर फॉर एवरीवन आउट देयर दैट जो भी रीजन मिलेगा ना, आफ्टर ड्राइंग द एंटायर डायग्राम, जो भी रीजन मिलेगा रिजल्टेंट रीजन, अगर वो स्टैंडर्ड शेप में नहीं है, in that case apply the concept of integration and get the area। like in the previous cases जो एरियाज मिला था, जो रीजन्स मिला था, वो स्टैंडर्ड शेप में नहीं था, तो वहां पे हमने इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट यूज करके वी गॉट द सॉल्यूशन। बट अगर आपको एक स्टैंडर्ड शेप में मिल गया, लाइक ट्रायंगल शेप या रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, अगर आपको ये वाले शेप में मिलेगा गाइस, इन दैट केस व्हाई टू वेस्ट योर टाइम डूइंग इंटीग्रेशन? आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है एरिया कैसे निकालना है वो वाले शेप्स के लिए, सो डायरेक्टली अप्लाई द एरिया फॉर्मूला इन दैट केस एंड गेट द सॉल्यूशन। सो आई होप this is clear for all the students out there।
ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन एवरीवन। तो चलो यार एक और क्वेश्चन करेंगे आज के सेशन में एंड देन विल वाइंड अप द सेशन टुडे। सो यू सी दिस क्वेश्चन एवरीवन, द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन y equal to 1 by x square plus 1 and the x-axis, what is this going to give you? Okay, so guys, very simple, हमें ऑलरेडी ये ग्राफ ड्रॉ किया था, याद है ना? एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन आई टोल्ड यू y इक्वल टू 1 by x square plus 1 का ग्राफ कैसे दिखेगा? Let me draw that graph for you again. So this is how the graph of y is equal to 1 by x square plus 1 is going to look like. So guys, ऐसे दिखेगा ग्राफ y is equal to 1 by x square plus 1. So you can write down y is equal to 1 by x square plus 1 का ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। आपको आपको बेसिकली एरिया निकालना है ये ग्राफ एंड एक्स एक्सिस के बीच में। So you can clearly see that this is the area we need to find out. Okay, so you see here, this is the area everyone, you see this is the area we need to figure out in this question. यार कैसे निकालेंगे ये वाले एरिया यहाँ पे everyone? How do you find out this area everyone? Thank you so much Nani, that's so sweet of you. तो या आप देखो यहाँ पे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके, सो सी हियर एवरीवन, सो आपको ये वाले एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे यार? वेरी वेरी सिंपल। एरिया निकालने के लिए आप यहाँ पे यूजिंग द वर्टिकल स्ट्रिप आप निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे अपर लिमिट इन्फिनिटी होगा, फंक्शन होगा 1 by 1 plus x square into dx. So from here you see what is the solution I'm going to get? तो यार एरिया मिलेगा इंटीग्रेशन dx by 1 plus x square होगा tan इनवर्स x, एंड अगर आप अप्लाई करेंगे लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सो गाइस देखो यार इन्फिनिटी, इफ यू पुट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी तो पाई बाय 2 होगा। सो आई कैन से वन वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट इन दिस केस is going to be pi by 2 everyone। यार क्या हो गया? हाँ, so a is equal to pi by 2 minus of tan inverse of minus infinity क्या होगा यार? वो तो minus pi by 2 होगा। तो यहां से आपको एरिया का वैल्यू मिल जाएगा pi by 2 plus pi by 2। the area value is going to be pi by 2 square units everyone, sorry pi square units, and if you see the options everyone, option B होगा right answer। So I hope this question is also clear for you। तो see simple questions है, मतलब एक बार concept समझ में आ जाएगा ना, this type of questions are going to be very easy। I told you one, this question is the last one। एक और question कर लेते हैं, okay, because I told you यार ये तो favorite topic है मेरा, तो I can keep on going on but I'll not waste your time also, already 10 हो गया। So let me do one more question everyone and then we'll wind up the session। Okay, fine। So hello Abhishek, good evening Abhishek, how are you man? तो चलो यार ये वाले क्वेश्चन देखो। The ratio of the areas between the curves y equal to cos 2x and y is equal to cos x and x-axis from x equal to 0 to x equal to pi by 3। तो ये वाले क्वेश्चन में यार आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दो एरियाज निकालना है। एक एरिया होगा cos 2x का एरिया between and x axis between x equal to 0 and x equal to pi by 3, एंड दूसरा एरिया होगा cos x and x axis के बीच में in the interval 0 to pi by 3 क्या एरिया मिलेगा आपको? So first let me do one thing, let me take cos 2x का ग्राफ। okay, so guys cos 2x का ग्राफ I know few students might find it difficult, it's very easy guys। क्या करेंगे आप यहाँ पे देखो, this is going to be 0, let me take 0, okay, let me take 0, and this is going to be 1 minute guys, yeah, so this is going to be 0, let us say यार ये होगा pi by 3, okay, let me take this is going to be pi by 3, okay, and let us say this is going to be pi by 2, okay, pi by 2, and let us say this is going to be यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे pi by 2 होगा, and then let us go with, let us say this is going to be pi by 2 pi by 3, okay, let us go with 2 pi by 3, okay, pi by 3, or let's do one thing, in fact इसको हमें अगर आपको, let's do one thing, okay, let us first draw the graph of cos x, क्योंकि cos x simple है, so let me first plot the graph of cos x and let me find out the area and then we'll do for cos 2x। okay, तो guys देखो यार यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 0 है, यहाँ पे pi by 3 है, तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसे ही दिखेगा ना,
and this is going to be pi by 2. Okay, so cos x ka graph is going to be something like this. This is how the cos x graph is going to look like, and we need to find the area. We need to basically find the area of cos x and x-axis between which 2 points, between x equal to 0 and x equal to pi by 3. Okay, so ये x equal to 0 है, ये आपका x equal to pi by 3 है, तो between this is the graph of cos x everyone. ये किसका ग्राफ होगा? y is equal to cos x का. यहाँ पे आपको ये वाले एरिया भी मिलेगा. This is the area which we need to find out. Okay, guys, area क्या होगा यहाँ पे? area यहाँ पे let us say this is going to be represented by a2. तो a2 होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेके pi by 3 cos x into dx. Very simple. So I can write down a2 is going to be cos x का मतलब इंटीग्रेशन sin x होगा, तो sin x in the interval 0 to pi by 3. यार आपको मिलेगा sin pi by 3 जो कि होगा √3/2. sin 0 होगा 0 anyway. तो बेसिकली आपको मिलेगा a2 का वैल्यू एंड दैट इज गोइंग टू बी √3/2. यहाँ तक किसी का कोई डाउट? एवरीवन, एनीवन इज हैविंग एनी मोर डाउट? गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग जिशान. Hi Nobita, good evening. Hello Vijay Kumar, good evening guys, good evening. So this is how you have to calculate the cos x area between 0 to pi by 3. Very simple. Integration 0 to pi by 3 cos x into dx कर लेना. यहाँ से आपको एरिया a2 मिलेगा. Now to calculate the area a1, everyone, यहाँ पे आपको cos 2x का ग्राफ प्लॉट करना है between 0 to pi by 3, and this is where you are going to get confused. So let me do it in a very detailed way. देखो यार, ये आपका x axis है और ये आपका y axis है यहाँ पे. Now let me take the points for you. Okay, let me take this particular point which is going to be, let us say x equal to 0. ये आपका 0 हो गया. Okay, and let us go with cos 2x का ग्राफ है ना, so let me go with यहाँ पे 2 pi by 3 तक मिलेगा आपको. So let us say 0. Okay, let us say pi by 6. Let us say यहाँ पे pi by 3. Okay, and then let us say pi by 2. Okay, and let us say this is going to be pi, in fact 2 pi by 3. Okay, it's going to be pi by 2, and let us say थोड़ा गैप लेके यहाँ पे let me also write down 2 pi by 3. Okay, so these are the points I'm going to write it down for you. Okay, now अगर आप ग्राफ देखेंगे guys, y is equal to cos 2x का, it's going to start here. Okay, and guys यहाँ पे देखो यार everyone. Okay, for x is equal to which value? For x is equal to which value? Can I say for x is equal to pi by 6? Okay यार, cos क्या मिलेगा? y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? You see y is equal to cos of, यहाँ पे देखो यार, x इक्वल टू पाई बाई 6 के पास आपको cos ऑफ पाई बाई 3 का वैल्यू मिलेगा which is going to be 1/2, right? And at x is equal to pi by 3, okay, you are going to get cos of 2 pi by 3. So यहाँ पे I think यहाँ पे एक मिस्टेक हमने कर लिया. यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें तो 0 to pi by 3 के बीच में ही कंसिडर करना है ना. आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे मैंने उसके ज्यादा ही ले लिया यहाँ पे. सो 0 से लेके आपको पाई बाई 3 तक कंसिडर करना है. सो नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज. तो 0 ये आपका पाई बाई 6 है. लेट अस गो विथ पाई बाई 4 देन. ओके, एंड देन आपका यहाँ पे पाई बाई 3 मिल जाएगा. नाउ एवरीवन लिसन टू दिस ग्राफ. क्या होगा यार, यहाँ से स्टार्ट होगा. एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 यार आपको cos पाई बाई 2 मिलेगा विच इज गोइंग टू बी 0. तो y आपको 0 मिलेगा यहाँ पे. सो यहाँ से यहाँ तक द ग्राफ इज गोइंग टू बी इन दिस वे. And after this pi by 4 point, यहाँ पे देखो, when you take pi by 3, cos 2 pi by 3 का वैल्यू नेगेटिव वैल्यू मिलेगा आपको यार, वो मिलेगा -1/2. So the graph is going to be something like this. तो ये होगा क्या? ग्राफ ऑफ y is equal to cos 2x in the interval 0 to pi by 3 everyone. Okay, now this is very important, क्योंकि देखो यार यहाँ पे अगर आपको अभी एरिया निकालना है ना 0 से लेके पाई बाई 3 के बीच में cos 2x का ग्राफ, इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया, तो हमें ये वाले एरिया निकालना है, राइट? वी नीड टू बेसिकली फिगर आउट कि ये वाले एरिया क्या होगा, हमें बेसिकली निकालना है.
Okay, so to do that, what you can do in this question is that you can do it in this way. तो एरिया निकालने के लिए what I'll do, I'll take integration 0 से लेके पाई बाई 4, वाइट 0 to पाई बाई 4, क्योंकि देखो यार 0 to पाई बाई 4 के बीच में वो जो भी रीजन है वो अबाउ द एक्स एक्सिस है. So we need to take a positive value. We need to मतलब वहां पे कैसे भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा एरिया का. तो 0 से लेके पाई बाई 4 ये होगा cos 2x इंटू डी एक्स. ओके, अभी देखो पाई बाई 4 टू पाई बाई 3 के बीच में यू हैव टू बी केयरफुल. पाई बाई 4 टू पाई बाई 3 के बीच में व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस एवरीवन, यू सी एरिया वो रीजन एक्स एक्सिस के बिलो है गाइस. सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, अगर आप इसका एरिया निकालेंगे ये वाले रीजन का, यार वो तो नेगेटिव होगा. सो व्हाट विल डू, इंटीग्रेशन पाई बाई 4 टू पाई बाई 3, यार ये होगा cos of 2x into dx, right? It's going to be cos of 2x into dx. Let me take this inside the mod, क्योंकि अगर आप इसका वैल्यू निकालेंगे it will turn out to be negative because of the mod. यार ये पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट होगा. So from here, let's do the solution now. तो यार आपको मिलेगा, let me do it in another page so that it will be clear for you. So I can going to get, okay, I'm basically going to get it this way. तो एरिया आपको मिल जाएगा, इंटीग्रेशन cos 2x का वैल्यू क्या होगा, यार वो होगा sin 2x by 2. ओके, एंड द लिमिट इज 0 से लेके पाई बाई 4 प्लस अगेन मॉड्यूलस ऑफ अगेन इंटीग्रेशन cos 2x होगा sin 2x by 2. ओके, एंड यहाँ पे यू कैन टेक लिमिट बिटवीन पाई बाई 4 टू पाई बाई 3. So this is what you're going to get everyone. I hope it's clear for you. Okay, so this is what you are going to get, right? So let us find the value. Let us see what is the value. Let me take this to be a1. तो a1 का वैल्यू मिलेगा 1 by 2 into यार sin of 2 sin of pi by 2 मिलेगा, which is going to be 1 minus of 0 for x equal to 0 sin 0 is 0 प्लस यहाँ पे देखो 1 by 2 into यहाँ पे इसको मॉड में ले लो गाइस 1 by 2 into so for x equal to pi by 3 you are going to get sin 2 pi by 3 which is going to be root 3 by 2 minus of यार ये होगा 1. ओके, I'm going to get a1 as 1 by 2 प्लस यार ये कितना होगा यहाँ पे, it's going to be modulus of root 3 by 4 minus 1 by 2. This is what you are going to get everyone. I hope this is clear for all the students out there. Okay, इसमें कोई डाउट है यहाँ पे किसी का, this is what you are going to get. No, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि this is what you are going to get. a1 का 0 to pi by 4 cos 2x into dx और a2 के लिए हमने pi by 4 to pi by 3 cos 2x into dx, इससे हमने mod में ले लिया. You have taken this inside the mod. Okay, now from here everyone, what are you going to get? You got, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लिया था sin 2x by 2 और ये भी sin 2x by 2, ये लिमिट 0 to pi by 4 और यहाँ पे लिमिट हमें मिला है pi by 4 to pi by 3. okay, so when you apply the limits everyone, sin pi by 2 का वैल्यू 1 होगा minus sin 0 0 और यहाँ पे 1 by 2 into sin 2 pi by 3 sin of pi minus pi by 3 that's going to be sin pi by 3 जिसका वैल्यू होगा root pi by 2 minus sin pi by 2 आपको मिलेगा for x equal to pi by 4 sin pi by 2 which is going to be 1. So this is what you're going to get everyone, root 3 by 4 minus 1 by 2. Okay, when you multiply it with 1 by 2 it's going to be root 3 by 4 minus 1 by 2. So guys आप लोग बता दीजिए root 3 by 4 minus 1 by 2 value. Okay, so if you take it inside the mod, यार डेफिनेटली ये वाले वैल्यू तो नेगेटिव होगा ना, root 3 by 4 minus 1 by 2. Can you tell me what is root 3 by 4 going to be approximately? Anyone here? Root 3 by 4 approximate value बता दो. It's going to be something like 0.4 minus 0.5. यार ये डेफिनेटली एक नेगेटिव वैल्यू है. I can say this is going to be a negative value. So what you can do is you can write a1 as 1 by 2. So this because of mod आप इसको 1 by 2 minus root 3 by 4 ले सकते हैं. So 1 by 2 plus 1 by 2 यार ये होगा 1 minus of root 3 by 4. This is what you are going to get. This is going to be a1 and यार ये होगा आपका a2. Right everyone, this is going to be your a2 value. So if you want to find out the ratio of the areas between them, सर आपको यहाँ पे a1 by a2 निकालना है.
This is what we're going to get. A1 by A मिलेगा आपको 4 minus root 3 divided by 4 whole divided by root 3 by 2. So 2 1 are 2 2s are, you end up getting 4 minus root 3 divided by 2 root 3. This is the solution you are going to get, everyone. अगर आप option देखेंगे, do we have any option in this way? No. So the right answer is going to be D, which is going to be none of this. So understood everyone this question? तो यार ये वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, पहले हमने cos x का एरिया निकाला था between 0 to pi by 3 and then we got the area of cos 2x between which one, 0 to pi by 3. Okay, and from that we got the area a1 value, area a2 value, and when we have done a1 by a2, this is the solution we got, which is 4 minus root 3 divided by 2 root 3, and this is going to be the answer. So guys, I hope this question is clear for all the students out there. Okay, so by this we are to the end of this particular session today. So यार ये question अच्छा question था, क्योंकि यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, you directly integrate, मतलब यहाँ पे mistake आप लोग क्या करेंगे कि second वाले integral में for finding the area a1 you do it directly in this way, integration 0 to pi by 3 cos 2x into dx, but that is not correct. अगर आप cos 2x का plot करेंगे between 0 to pi by 3, this is how it is going to look like. So according to this diagram, this is how you have to find the area. Okay, and from that you're going to get the answer. So I hope this question is clear for all the students out there. So chalo yaar, let us wind up the today's session then. So thank you so much everyone. तो आज हमने डिस्कस किया है एरियाज के बारे में, you know, how to sketch few curves, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशंस के ग्राफ देखा था, स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ हमने देखा था, एंड we have many questions based on concept of area under the simple curve. Okay, तो यार कल मिलेंगे 3 PM के सेशन में, where I'm going to discuss the other concepts related to the areas वाला chapter. Okay, so definitely join that particular session guys. वहाँ पे भी हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे, previous year questions करेंगे based on the concept, based on the areas concept. And before you leave guys, everyone listen to this, if you're still not a part of this awesome telegram group, yeah, you're missing many things. Okay, so do join the telegram group guys. आपको सारे updates मिल जाएगा, exam related notifications मिल जाएगा ये वाले group पे. You can join it through this link, or QR code available है ना, scan कर लेना QR code. Through that QR code also you can definitely join. Okay, and one more important thing guys, I know you have understood all the topics. Okay, अब मुझे पता है कि आपने enjoy अपने session को enjoy कर लिया. So let me know by liking this video guys. Let me know in the comment section what you have liked most in this particular session today. And guys, share करना आपके friends से, so that they can also revise this topic like you guys. And if you have not subscribed, subscribe करना है ना, तो subscribe करो guys. Everyone subscribe to the channel and stay tuned to the channel to get such awesome videos. Okay, so thank you so much everyone. Take care everyone. Good night guys. यार मिलेंगे कल के 3 PM सेशन में, जहां पे हम और कोई कॉन्सेप्ट्स, मतलब कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड ऑल्सो द अदर क्वेश्चंस ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, तो चलो यार, बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, सी यू एवरीवन, सी यू टुमारो एट 3 PM.